I hope now my voice is audible. I encountered some kind of a technical issue with my microphone again. I don't know what is the reason, but I guess now it is visible. I mean, this is audible to you. So this is the first question. A normative theory combining aspects of liberalism and social responsibility theory is A, Eastern belief, B, Latin American value, C, Western concepts, and D, pluralism. So you just have to uh, you have to answer the right question, right option out here. So without wasting much time, so the right option over here is pluralism. Now, why pluralism is the right option? Because this normative theory is combining two aspects. The one is the liberalism and another one is the social responsibility theory. तो जब दो थ्योरी को कंबाइन किया गया है तो वो भी दो थ्योरी को कंबाइन किया गया है। एक लिबरटिज्म थ्योरी है जो ये कहती है कि मीडिया को लिबरल छोड़ देना चाहिए, उसको ये फ्रीडम दे देना चाहिए कि व्हाट टू कवर एंड व्हाट नॉट टू कवर। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी इस चीज को बताती है कि मीडिया को फ्रीडम तो दे देना चाहिए, बट अगेन इस फ्रीडम के साथ मीडिया को ये भी पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे यूटिलाइज करना है। तो प्लूरलिज्म जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को डिफाइन करता है, जहां पर दोनों चीजों को कंबाइन किया जाता है। आई गिव यू द अनदर स्लाइड। So this slide is saying that pluralism is the belief that many different voices, opinions, and media ownership forms should coexist. It supports the freedom of expression while also recognizing that media must serve the public good. तो जैसे कि मैंने बताया कि वो दोनों ही कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रहा है प्लूरलिज्म, जहाँ पे एक बार ये कह रहा है इट सपोज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, और वहीं पे ये भी कह रहा है दैट इट इज ऑल्सो इट ब्लेंड्स फ्रीडम विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मीडिया की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्लूरलिज्म जो है ये दोनों बिलीफ्स को इस दोनों बिलीफ्स यानी कि दोनों वॉइसेस लाइक डिफरेंट वॉइसेस, ओपिनियंस एंड मीडिया ओनरशिप को अपने में अमलगेमेट कर रहा है इस चीजों को। तो दैट इज द रीजन व्हाई प्लूरलिज्म इज द राइट आंसर। Now coming to the next question. Okay, now there is one example also about the pluralism, that a country allowing both private and the public broadcasters, community radio, independent online media, all operating under the rules to prevent hate speech and promote fairness, that pluralism। यानी कि आप इसी ये वर्ड है ना प्लूरल, यानी एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा किसी मीडिया को इस्तेमाल करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, so that kind of a approach is can be said as the pluralism। Now coming to the next question without wasting much time. So the next media institution manufactures marketable goods, meaninglessness, representation, and development. So these are the questions that UGC ask. अब आप ये बताओ कि ये क्वेश्चन आप कौन से बुक में पढ़ोगे that you'll be able to answer it. Absolutely, there is no such book that would help you to answer this kind of a question. So these kind of a question can be answered with the help of your logic and with the help of your fundamental knowledge about this kind of communication and the mass communication, and the fundamental approach what you know about this institution. So there is no such books who can answer this kind of a question, so you have to use your logical approach and also your fundamental knowledge definitely। so यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है that मीडिया इंस्टीट्यूशन क्या मैन्युफैक्चर करता है, मार्केटेबल गुड्स। डू यू थिंक दैट मीडिया इंस्टीट्यूशन मार्केटेबल गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है? नहीं, मीडिया इंस्टीट्यूशन का काम मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस करना नहीं है। ओके, मीनिंगलेसनेस, अब ये क्या बात हुई भाई, मीडिया इंस्टीट्यूशन क्या मीनिंगलेसनेस को प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा? देयर इज एब्सोल्युटली इट इज एक्चुअली दिस वर्ड इज मीनिंगलेस टू दिस अप्रोच। यहाँ पे ये चीज कहीं भी फिट नहीं हो रहा है। थर्ड इज द रिप्रेजेंटेशन, यस रिप्रेजेंटेशन कुड बी द आंसर। एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट। मीडिया इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर करा, डेवलपमेंट क्या मैन्युफैक्चर हो सकता है? डेवलपमेंट इज अप्रोच, डेवलपमेंट इज अ ह्यूमन रिवोल्यूशन, इट इज समथिंग विच इज अबाउट जिस विच कैन बी सीन। पर ये मैन्युफैक्चर कैसे होगा डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर इज समथिंग विच इज वेरी वेग कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक दैट रिप्रेजेंटेशन इज द राइट आंसर। एंड वाई रिप्रेजेंटेशन इज द राइट आंसर? बिकॉज मीडिया में जितने भी आप
सीरियल्स देखते हैं, टीवी शोज देखते हैं, वो कुछ मूवीज देख रहे हैं, वॉट एवर यू आर वॉचिंग इट इज समहाउ रिप्रेजेंटिंग दी आर सोसाइटी। कोई भी मूवी देख रहे हो, कोई भी वेब सीरीज देख रहे हो, वो हमारे किसी न किसी टाइप की सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीडिया इंस्टीट्यूशन जो मैन्युफैक्चर करता है वो है रिप्रेजेंटेशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू you. As I have already mentioned, that when we say the media institution manufactures marketable goods, we are not talking about the physical goods like shoes or cars. We're talking about the media content. Okay, हम इसको ही कहते हैं marketable. I mean the marketable goods. तो हम लोग जो representation है वो है reality of the society. तो हम उसको media इसको represent करते हैं. This is clear to you. Now, fatafat coming to the next question. The idea that the media penetrate people's mind and instantly create an infect. Yeah, this is very easy to answer question that these are the options that agenda setting. You know, agenda setting is what? Agenda setting is a theory where the news channels they set the agenda which are actually which they think that they are important and they need to be addressed in a society and they need to be talked about and they need to be highlighted more. So the media is actually selecting those kind of those kind of news basically, and then they are representing it to us based on their judgment. So people's judgment are not required and they feel that it's us, the media will tell the people that what to think about. That is the agenda setting. पर यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है the idea that the media penetrate people's mind and instantly create an effect. अब एजेंडा सेटिंग में इफेक्ट की बात नहीं हो रही है। इफेक्ट की बात जब होगी तो हम मैजिक बुलेट थ्योरी की बात करेंगे। तो मैजिक बुलेट थ्योरी इज द राइट आंसर, क्योंकि मैजिक बुलेट थ्योरी में जिस तरीके से जो कि यही कहता है कि मीडिया में जो भी चीजें दिखती है, आई मीन हम जो भी कुछ दिखाते हैं वो लोगों में एक बुलेट की तरह डील करती है। जैसे कि मैजिक बुलेट को हाइपोटोमिक नीडल थ्योरी भी कहते हैं, जिस तरीके से एक नीडल को इंसर्ट करने के बाद कई काइंड ऑफ इफेक्ट आता है, ठीक वैसे ही इफेक्ट आता है जब आप देखते होंगे कि कोई एक हॉरर मूवी आपने आप देख लिया, तो वो हॉरर मूवी आपके दिमाग में घूमते रहेगा। आप वॉशरूम जा रहे हो, आप किसी भी अंधेरे जगह पे जाओगे, यू फील लाइक दैट समबडी इज अराउंड यू and some invisible supernatural effect you could actually feel like. So that is called the media magic bullet theory, or of course that is called as the hypodermic, because you feel you are so much involved in watching it, you feel like something is happening around. आप कोई पेट्रियाटिक मूवीज देखने जाइएगा, आपके अंदर एक पेट्रियाटिज्म आएगा। आप कोई स्पिरिचुअल माइथोलॉजिकल मूवी देखने जाइएगा, आपके अंदर वो माइथोलॉजिकल फील आएगी, आपको भगवान और ईश्वर और सबके प्रति, धर्म के प्रति बहुत रिस्पेक्ट आ जाएगा। तो जिस टाइप की चीजें आप देख रहे हो उसका एक इमीडिएट इफेक्ट जब लोगों के अंदर आता है एंड दे स्टार्ट creating a kind of effect, that is called the magic bullet effect theory oblique hypodermic needle theory. So C is the right answer. Now let's come to the next question. The next question is find out the correct sequence. इसमें से आपको एक correct sequence find out करना है. So the correct sequence without wasting time is C. Critical theory, uses and gratification theory उसके बाद आएगा, dependency theory उसके बाद, and cultivation theory उसके बाद. Just for your glance, critical theory came in the year 1923, uses and gratification came in 1959, and then uh, yes, 1959, and then dependency theory 1974. This you can see the all the years wise question like the critical theory. Then it's first it is critical, then it is uses and gratification, then it is dependency, and then last is the cultivation. That is in the year 1976. I hope this is clear to you. Now let's come to the next question. So now there is again out of this question, I'll just talk. I give a brief about the critical theory. So what is critical theory is? So the critical theory is in mass communication is a framework that analyzes how media and communication systems reinforce power structures, inequalities, and social ideologies in society. It questions who controls the media, whose interest it serves, and how it shapes the public consciousness. So it's not just about how media communicates message, but about how media influences the society. Okay, तो critical theory में जो सबसे important बात है कि इसमें बहुत सारी important चीजों के बारे में बात करते हैं, which is about
it talks about, how the media and communication system, they reinforce the power structures, they reinforce the inequalities, they address these kind of issues. And again, it also talks about how it shapes the public consciousness. Okay, that is the most important thing. So who is controlling the media and whose interest it serves? Like, क्या मीडिया जो है, क्या वो मीडिया किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस कर रही है, या किसी एक बहुत बड़े कॉस्मोपॉलिटन चीजों को डील कर रही है, या कोई अदानी अंबानी किस चीज किसी के इंटरेस्ट को सर्व कर रही है? अगर ऐसा कर रही है, देन दिस इज द दिस इज द थ्योरी व्हिच एक्चुअली क्रिटिसाइजेस दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसमें यही कहा गया है कि क्रिटिकल थ्योरी इज अबाउट इनइक्वालिटी के बारे में, इनइक्वालिटी जैसी चीजों को, पावर स्ट्रक्चर जैसी चीजों को वो खारिज करती है और इक्वालिटी की बात करती है। ओके, सो इसमें क्या है, क्रिटिकल थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रैंकफर्ट स्कूल इन जर्मनी फ्रॉम ड्यूरिंग 1920s and 30s, and the key scholars are Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse and Jürgen Habermas। ये चार नाम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर, whenever it comes the critical theory, you should remember all these four names. This is the key word. Okay, remember these four names, and also remember this school, that is Frankfurt School, and which country it belongs to, Germany. Okay, and it came into existence in the year 1920s to 30s. So these are the name of the key scholars which are very very important, and I'm going to tell you that these are एक क्वेश्चन तो क्रिटिकल थ्योरी का आता ही आता है। सो दिस स्लाइड इज एक्चुअली डीलिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो जस्ट मार्क इट, लिख लो कहीं पे, एंड लिख लो, मेरे वर्ड्स लिख लो दैट क्रिटिकल थ्योरी इज गोइंग टू कम। एंड इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थ्योरी के स्कूल से बिलोंग करती है, फ्रैंकफर्ट स्कूल है तो कौन से कंट्री से है, और ये चार नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, you have to match the following. Okay, so I'll explain this question later on, क्योंकि ये match of the following इसमें मुझे कुछ बहुत important चीजें concept clear करनी है, इसलिए मैं इस question को अभी reserve रखती हूँ for your next class। चलिए आगे बात करते हैं। Priming effect of Leonard Berkowitz focuses on, किस चीज को फोकस करता है ये नाम, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, टेलीविजन वायलेंस, इंडिविजुअलिज्म, या personal relations? So the right answer of this question is, I think it is television violence। प्राइमिंग इफेक्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमिंग इफेक्ट इज बेसिकली टेलीविजन वायलेंस को ये करती है, क्योंकि इसमें इसके थ्योरी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The information processing theory argues that our cognitive resources are large, superfluous, limited, या unreliable। अब ये क्वेश्चन देखो, अगेन ये क्वेश्चन किसी भी बुक में किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज समथिंग, इफ यू फील लाइक आई विल बी गेटिंग दिस क्वेश्चन इन एनी ऑफ द बुक्स, और in any concept, in any theory, it might be mentioned in any of the theories, so you are absolutely wrong. This question is again it based upon your fundamental approach and some of your common sense। So question is that again इस type का कुछ question है ना, you have to read and reread such questions। The question is saying that the information processing theory, अब ये थ्योरी है, ठीक है, आपको नहीं भी पता है ये थ्योरी, बट फिर भी यू कुड यूज योर कॉमन सेंस। कह रहा है द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी आर्ग्यूज दैट आर कॉग्निटिव रिसोर्सेज, हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज यानी हमारी माइंड के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लार्ज है। आपको लगता है कि हमारे माइंड में बहुत एक लार्ज कैपेसिटी है जो सारे इंफॉर्मेशन को कंसीव कर सकती है? आई थिंक नो। सुपरफ्लुअस, आपको लगता है कि अबंडेंस है? नहीं है। लिमिटेड और अनरिलायबल, अनरिलायबल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनरिलायबल क्यों होगा, हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज में अनरिलायबल की चीजें नहीं हो सकती है। ऑफ कोर्स हम रिलाई करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को, तो अनरिलायबल तो बिल्कुल इनवैलिड है। सो द थर्ड ऑप्शन इज लिमिटेड। यस, हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, दैट इज लिमिटेड। हमारे पास एक सिलेक्टिव, हमारे कॉग्निशन में हम सब कुछ इंक्लूड या इनकॉर्पोरेट या ठूस नहीं सकते। हमारी कैपेसिटी, ब्रेन की हमारा बैंडविड्थ जो है वो लिमिटेड है। सो दिस इज द राइट आंसर। सो सी इज द राइट आंसर, इट इज लिमिटेड।
I hope this is clear to you. Yeah, यहाँ पे एक मैंने लिखा भी है that the cognitive processing, I mean information processing theory, that audiences are active, but they have limited processors of information. And we receive, select, organize, store and retrieve the information much like a computer system. जिस तरीके से computer system है तो उसका भी एक capacity है, एक storage है, okay, so that they could retrieve the information. The same is like the human capacity, the human cognitive approach. So they also have this limited version, the limited bandwidth, okay. So we cannot attend or process all the information simultaneously because our mental capacity is, of course, it is restricted. It is not in abundance. Next question. The concept of structural violence are related to mass communication can be traced to John Galton, Jacob Thompson, William Parker, yeah, Mark Pearson. Again, these are all the important questions. Very, very important question. The correct answer is John Galton. And why this answer is correct? Because as you can see, yes, John Galting is the right answer because John Galting introduced the term structural violence. So he's the one who introduced this term structural violence, and structural violence in his essay like Violence, Peace, and Peace Research. So structural violence refers to a social structure or institution that directly cause harm by denying people equal access to resources, rights, or opportunities. It is not a physical violence, but rather a systematic form of harm built into society, often invisible. So, in the context of mass communication, structural violence occurs when media system reinforce inequality, exclusion, oppression through biased representation of certain groups. स्ट्रक्चरल वायलेंस एक ऐसा वायलेंस है, मैं इसको हिंदी में समझाती हूँ. स्ट्रक्चरल वायलेंस एक ऐसा वायलेंस होता है जो कि आपको फिजिकली डैमेज नहीं करता. एक वायलेंस है जो अपने वायलेंस का अगर इमेज आएगा तो हमेशा यही इमेज आता है कि दो लोगों के बीच में हिंसा हो रही है और एक मारकाट हो रहा है, बट दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ वायलेंस. स्ट्रक्चरल वायलेंस है कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर को मतलब उसको उसको क्षति हो रही है, हमारे इंस्टीट्यूशन को क्षति हो रही है. अगर आप किसी कोई भी मीडिया अगर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को प्रेफर कर रहा है या कास्टिज्म पर बातें कर रहा है और डिफरेंशिएट कर रहा है और इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है या ऑपरेशन को बढ़ावा दे रहा है, तो वैसे वायलेंस जो होते हैं जिसका कोई भी फिजिकल रूप नहीं है बट वो स्ट्रक्चरल तरीके से हमें हार्म कर रही है, हमारी सोसाइटी को हार्म कर रही है, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को, इंस्टीट्यूशन को हार्म कर रही है, हमारे इकोनॉमी, एजुकेशन को हार्म कर रही है, हमारे पॉलिटिक्स को हार्म कर रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म कर रही है, मीडिया को हार्म कर रही है, वैसे वायलेंस को स्ट्रक्चरल वायलेंस कहते हैं, जिसके प्रभाव से हमारी मीडिया को, हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं उसका एक असर पड़ रहा है. बट दैट वायलेंस इज नॉट इन द फिजिकल फॉर्म बट रादर इट इज इन other way around, like it is in the form of a structural institution, जिसको indirect cause कह सकते हैं, indirect harm कह सकते हैं. तो वैसे harm को हम कह सकते हैं structural harm. ओके, systematic form of harm कह सकते हैं, इसको मैंने underline भी किया हुआ है. systematic form of harm, ठीक है, जो कि इनविजिबल होता है. Next is, and the second last, the concept of mindful journalism has drawn inspiration from mindful journalism की बात हो रही है. तो जब भी ये word आएगा mindful journalism, हमेशा ध्यान रखिएगा Buddhism is the right answer. So why Buddhism is the right answer? Because Buddhism it is guided by awareness, compassion, responsibility, and ethical consciousness. So it encourages the journalist to report with empathy and understanding. किसी भी मौके पे अगर आप जा रहे हैं, किसी भी एक इवेंट पे जा रहे हैं, किसी एक वायलेंस इफेक्टेड एरिया में जा रहे हैं और अगर आप वहां पर एग्जैजरेट कर रहे हैं किसी चीजों को unnecessarily, without knowing the truth, without knowing the fact, without knowing the accuracy, and if you are exaggerating the entire thing and creating a chaos in the society, that is not a mindful journalism. Rather, that is the a very disturbing kind of journalism that will create disturbance in the society, that will create harm to the society. So whenever mindful journalism, it speaks about to be responsible while covering any event, covering any sensitive event, especially some kind of a sensitive issue. Covering, you have to be compassionate, you have to be aware about the event first of all, and then report it to the people. You should have the ethical consciousness, right? So it talks about those things in the mindful journalism. So the concept of mindful journalism, it draws deeply
From the Buddhist philosophy, particularly the principle of mindfulness is sati, right speech, compassion, that is karuna, and from the noble eightfold path. So it has derived. I'm in the very speed mood, I guess. Uh, हम कह सकते हैं structural vibe, systematic form of harm कह सकते हैं, इसको मैंने underline भी किया है, form of harm, जो कि invisible होता है. Next is, and the second last is on. Okay. I was just checking if my voice is audible to you, and I just want to check my speed. I think I today I went on a very bullet speed mode. Okay, chalo koi nahi. Stage of interpersonal communication is called the fatigue stage, intimate stage, the personal stage, or the last, the public stage. तो the initial stage of interpersonal communication, जब interpersonal communication मतलब दो लोगों के बीच की communication की बात हो रही है, and whenever these kind of a stage comes, so the first stage, the initial stage, and the first stage of interpersonal communication क्या होता है, जब हम किसी को hi या hello बोलते हैं, तो that is the ice breaking stage. So when two people are meeting, so the first conversation they have, like hi, how are you, so that kind of a dialogue between two people, it comes under this fatigue stage. Okay, so the fatigue stage is the ice breaking stage where the two people start their conversation with just a small gesture like a hi and a hello. So that is called the fatigue stage. And yes, the fatigue stage. And then the fatigue stage is about that, the hi and the hello, and how are you? Good morning, namaste, vanakkam, whatever. Like, and the accompanying gestures are meeting of the eyes, a smile, or perhaps a handshake, and moving in a closer or talking a distance. So that is called the fatigue stage. The second stage is the personal stage, which actually is more personal element, where you are willing to talk about your family, and you are talking about your profession, your health problems. So it is a more of a personal element. So after the sophatic stage, you just move to the second stage, that is the personal stage, where you are talking about a little bit of your personal life, about your profession, about your health, about your family. So that is called the personal stage. So, and the third is the intimate stage, which is reserved for your friends and the relatives. So, your interpersonal communication, if you feel like the person whom you are meeting is very close relative, he's a very close, you know, uh, that interpersonal communication achieved its greatest form at this stage, as the social barrier it tend to open out their hearts completely. So that is the intimate stage. जो नाम भी बता रहा है ये intimate stage है. So आपके आपके लिए आपके बहुत close लोगों के लिए ये reserve रहता है, not for everyone. So that is all for this today's marathon. Uh, 10 important PYQs that are really, really important, and some of the questions are, I'm very sure, going to be uh, in one way or the other way. I don't know in what way, but they are going to ask in your upcoming exam. Especially, I'm very sure about the critical theory. That is really, really important. So आज मैंने जल्दी इसको वाइंड अप किया है, फटाफट मैंने क्वेश्चंस को डील किया है. प्लीज इसको देखिएगा वीडियो, और बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चंस को, इसके एक्सप्लेनेशंस को मैं बनाती हूँ, समझती हूँ पहले, उसके बाद आपको बताने की तरीके को, एग्जाम्पल्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जाम्पल को क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. सो प्लीज आई विल बी हैप्पी इफ यू यू नो शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड जो भी जिस भी लोगों को आप पहुंचा सकते हो, जो ये बार इस एग्जाम में बैठने वाले हो, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि मेरा 1% एफर्ट भी काम आया. So that's all for today, and all the best for your exam. I'll come next day, I mean tomorrow, and I'll talk about a new concept. So that will be not a PYQ. Basically, it will be about the concept. एक concept को मैं उठाऊंगी, especially about the advertising and the PR, and then I'll talk on stretch, and I'll talk about some of the important theories of advertising and PR. So